1, 2, 3 start. Good morning children, this is Suresh Kumar Dewangan. Once again I am here with you with the poem Keeping Quiet. आप सबको पता है Keeping Quiet is the second poem of class 12th Flamingo. Here I will not directly begin with the text of the poem, rather I'll give you something on it so that it's a kind of you can say beginning of the poem. Before we start with any of the poem, you must know the theme of the poem, the summary of the poem, and what is the background of the poem. That is more important than anything else. And of course, you should know something about the poet. Let us begin. Here we go. The poet Pablo Neruda. Remember children, this Pablo Neruda is a pet name. It's not the original name. Pablo Neruda wrote this poem in Spanish, and later on it was translated into English. And this poem lays emphasis, gives emphasis on, pays attention to, on introspection and retrospection and bodily sensation. 3 words have been used. All these 3 words are very important. Introspection, retrospection and bodily sensation. Definitely there is a difference between these 2 words. Introspection, that is analysis. आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करें, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन. और रेट्रोस्पेक्शन क्या है? आप अपने पास्ट में जाएं, उसके बारे में सोचें कि मैंने ये जो किया वो सही किया था क्या, और उन गलतियों से सीख ले, दैट इज रेट्रोस्पेक्शन. और इंट्रोस्पेक्शन इज सिंपली एनालिसिस. आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 वर्ड्स. एंड बॉडीली सेंसेशन, जो सेंसेशन आपकी बॉडी में होना चाहिए, अनुभव, या आप उसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सेंसेशन, भावनाएं जो जागती है आपकी. तो चलिए देखते हैं. द पोएट अपील्स टू द रीडर, because you are the reader here, so the poet is appealing to you. You feel it that the poet is talking to you directly, and he wants you to grasp the idea of understanding nature and society. आपको केवल अपने आप को नहीं समझना है, आपको नेचर को समझना है, सोसाइटी को समझना है. सो लेट अस रीड द कीप क्वाइट समरी along with the brief introduction of the author, and that is going to be asked in the examination. जो हमारे कुछ शिक्षक साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस बात को नोट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं ऑथर से आ सकते हैं और पोयम से आ सकते हैं. तो हियर विदाउट वेस्टिंग एनी minute, we'll begin with keeping quiet the author. I have already mentioned Pablo Neruda. Basically, he was a diplomat, a politician, and he won Nobel Prize for Literature. My dear children, getting Nobel Prize for Literature, it means he was a man of words. उनके लिखने में वो पावर थी. And one fellow gets Nobel of Literature in the year, and thousands of writers are there to write. Being an Indian, आपको पता होना चाहिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए. गीतांजलि के 8वें अध्याय के 56 पेज पे उन्होंने जो लिखा है उसके लिए उन्हें स्पेशली नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर, एंड ही इज द ओनली इंडियन राइटर who has received Nobel Prize for Literature so far. Let's get back to the poem. He got Nobel Prize in the year 1971. Unfortunately, after 2 years, he died. So he died in the year 1973. This also you can keep in consideration. He wrote in green ink. Yes, you must not have heard. हम कभी कभी लाल पेन से कॉपी चेक करते हैं, टीचर से तो प्रिंसिपल जो होते हैं वो ग्रीन पेन से साइन करते हैं, और बच्चे जो होते हैं ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से लिखते हैं. बट ही वाज इन द हैबिट ऑफ राइटिंग विद ग्रीन इंक, एंड व्हिच वाज हिज पर्सनल आइडियोग्राम. जैसे हिंदी के फिल्मों में देखते होंगे आप, रणवीर कपूर जो होता है वो कुछ भी कपड़े पहन लेता है, और ये उसकी आइडेंटिटी है. एक बार किसी इंटरव्यू में किसी हीरोइन से पूछा गया था, आई थिंक अनुष्का शर्मा से पूछा गया था कि आप रणवीर सिंह को परेशान करना हो तो कैसे परेशान करोगे. तो उसने बोला था कि मैं उसके वार्डरोब में अच्छे अच्छे कपड़े रख दूंगी. कहने का मतलब है
कि रणवीर सिंह अच्छे कपड़े नहीं पहनता, बट दैट इज हिज आइडियोलॉजी. दैट वाज राइटिंग विद ग्रीन पेन वाज आइडियोग्राम ऑफ Pablo Neruda. His writings are simple, wherein lies their beauty. बहुत ही सिंपल है, कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं किया जाता है, फ्री वर्ड्स में लिखा जाता है बाय पेब्लो नेरुदा. और आगे की चीजों को हम देखते हैं, ज्यादा इसे लेंथ नहीं देंगे. It was first written in Spanish. This poem, Keeping Quiet, was written in Spanish, and the emphasis of this poem is based on introspection and retrospection, as I have already mentioned it. The poet feels that some soul searching is required for us to be at peace with ourselves and others. बच्चों, ये जिस डिस्क्रिप्शन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो इस वीडियो के नीचे लिंक में दिया हुआ रहेगा. एक लिंक दिया रहेगा, उस लिंक को आप क्लिक करके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप उसे अपनी कॉपी पे बना सकते हैं, टीचर्स इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं, बच्चों को एज इट इज दे सकते हैं. तो चलिए देखिए, कीपिंग क्वाइट की हम थीम की बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट थीम. 4 लाइन की थीम है, और बच्चे जो परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाना चाहते हैं, ये पूरी 6 लाइन को रट लीजिए, याद कर लीजिए. किसी भी क्वेश्चन आंसर में आप इन 6 लाइन को लिख सकते, किसी भी क्वेश्चन आंसर में, माइंड इट, किसी भी क्वेश्चन आंसर में आप ये लाइन लिख देते हैं, द एग्जामिनर इज गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड दैट द चाइल्ड हैज थॉरो नॉलेज ऑफ द पोएम. द मेन आइडिया फोकसेस ऑन पीस एंड साइलेंस and enduring humanity and brotherhood. The poet expresses anger at same time. Poet also shows his anger, though he talks about peace, but he shows his anger. He is quiet in himself, speaking in a very calm fashion. He firmly believes in the idea of serenity and peacefulness and holiness. पवित्रता पे बिलीव करते हैं, and the best way to is not an explosion of expressions but wisdom, and wisdom comes through knowledge. The poet wants the reader to focus on introspection and retrospection to acquire the intelligence and to understand the purpose of the world. 12वीं पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं. आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जानता हूं आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इस वीडियो को ऐसा नहीं कि आप एक्सप्लेनेशन पे आके देखना चालू करें और फॉरवर्ड करें. जब आप ये थीम को और समरी को और पोएट को समझेंगे, एक्सप्लेनेशन इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू. एज फार एज राइम स्कीम इज कंसर्न, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स. कोई बाउंडेशन नहीं, कोई आयम्बिक पेंटामीटर नहीं है, एंड हेंस इट डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ राइम स्कीम. जो राइम स्कीम है उसे राइम सीन भी कहा जाता है, ध्यान रखिए, राइम सीन भी कहा जाता है. राइम स्कीम ही नहीं, इसे राइम सीन भी कहा जाता है. तो आपको एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि व्हाट इज द राइम सीन ऑफ द पोएम, तो आप ये मत कहना कि हमें तो सर ने राइम स्कीम पढ़ाया है, राइम सीन क्या होता है. राइम सीन एंड राइम स्कीम दे आर द सेम थिंग. चलिए, आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलने की आपको जरूरत नहीं है, वीडियो में आपको टेक्स्ट बुक दिख रहा होगा, एंड वी गो विद द फर्स्ट स्टेंजा. यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक if you have. Now we will count to 12 and we will all keep still. बच्चों, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, हाई पिच लो पिच पे ध्यान दो, और आप इसी टेक्निक से पढ़ें, मैं ऐसा चाहता हूं. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's not conversate. Let's not communicate in any language. It means let us be silent. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Not move our arms. ये arms हाथ पैर से मतलब तो है से arms. ये weapon से भी मतलब है, हथियार. Let us not use weapon. It is to those who initiate war. It is to those जो दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं. पूरी लाइन का अर्थ ये है. अच्छा, आई विल बी टॉकिंग टू लिटरेरी डिवाइस ऑल्सो. हर स्टेंजा पे जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, दैट आई विल बी टॉकिंग विद एग्जांपल, एंड देन एंड देयर, नॉट एट द एंड ऑफ द लेसन. लेसन खत्म होने पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, तब तक आप भूल चुके होंगे.
इसीलिए बहुत ध्यान से देखिए. नाउ वी विल काउंट टू 12. अब हम 12 तक गिनते. क्यों 12 तक भाई? 10 तक क्यों नहीं गिने? 11 तक क्यों नहीं गिने? 13 तक क्यों नहीं गिने? बिकॉज देर आर 12 आवर्स इन ए डे. There are 12 hours in a day. There are 12 months in a day. And the most importantly, there are 12 zodiac signs by which the whole universe is governed. इसीलिए पोएट 12 की बात करते हैं. तो let us count till 12 and we will keep still. जब तक हम 12 गिन रहे हैं तब तक चुपचाप खड़े रहें, शांतिपूर्वक रहें. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let us stop. आप explanation देखिए. The poet requests everyone to count up to 12, and the number 12 represents 12 hours of the clock, or 12 months of the year, and 12 zodiac signs. And let there not be any rush for the engines to be at halt, and machines must stop. Let the engine not work, and machine must stop. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second. 1 सेकेंड के लिए तो रुको भाई. 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ. And not move our arm so much. He further says, he implored, requests all of us not to speak and stop moving our arms. Arms here means weapons used by different countries to invade each other. Therefore, he is demanding peace from all of us. I hope first paragraph is clear. Is it clear? Pretty good. Now, अब literary device की बात करते हैं. देखो, सबसे पहले तो है assonance. What is assonance? The use of vowel sound O and E. अब very first line को देखिए आप अपने टेक्स्ट बुक में. यहाँ पे देखो PDF में जो मैं शेयर किया हूँ आपके साथ. Now O is there, and then O is there count, and here E is there, E is there. So use of vowel O and E in the same line is assonance. बहुत छोटी सी बात है लेकिन आपको ध्यान रखना है. Anaphora, the favorite. Anaphora. What is anaphora? 2 consecutive lines starting with the same word. Here what is that? Let's not speak. Let's stop. Therefore here anaphora is there. Alliteration, the repetition of consonant sound at the start of 2 or more closely placed word. We will. ये word हुआ ना पहले लाइन पे भी दूसरे लाइन पे भी. We will. So W and W, these are used. So here. So my dear children, I hope the first stanza is clear to you with all literary devices. Is it clear, children? Good. आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. साथ ही साथ में यदि और कोई प्रॉब्लम है तो you can definitely write in the next video. I'll take care of it. After all, I am here for you, not for my own sake. Let us begin with the second stanza. It would be an exotic moment. Yes. It is going not to be a normal moment. Rather, it is going to be an exotic moment, surprising moment. Without rush, without engine. No engine is working. All machine is stopped. We will all be together, all of us. Since we are not working, since we are not making any movement, we all will be together in a sudden strangeness. And that really will be very strange that we are all together. इन 4 लाइन का अर्थ देख लीजिए आप. शुरू में हम इन 3 लाइन का अर्थ देखेंगे, इन 4 लाइन का, और बाद में फिर बाकी की 4 लाइन देखेंगे. And here what the poet says, fishermen in the cold sea would not harm whales. Actually what happens, look at me children, what happens? Fishermen in the cold sea would not harm whales. Everybody is busy doing the work. The teacher is teaching, students are studying, captain is in his ship, driver is driving the car, many things are there. Let us stop. And when you stop, when the engine stops, that is going to be an exotic moment. So what will happen? The fisherman will get time to not to harm the whales, because if he is working, he is catching the whales, killing it. So he will get time in the cold sea, and he will not harm the whales. And the man gathering salt, he has never seen his hands.
that there are pores, there are holes in his own hand. He has hurt it so much. But every day he wears gloves, doesn't look at his own hand, and goes to work. He will get time, and that is the introspection. And once the introspection comes, retrospection will come. Once the introspection comes, retrospection will automatically come. ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. So the poet says, the poet warns the fishermen should not harm the whales, and those men who are gathering salt must take care of their hands. And the man gathering salt would look at his hurt hands. Everyone should keep calm. देखिए फर्स्ट 4 लाइन अब आ रहा है. Everyone should keep calm and stand united with each other. What we should do? We should stand united with each other. It will look strange, as something like this has never happened before. He further advised not to run after materialistic things. Yes, the poet says that you should not run after the materialistic things. Instead, the people should look at how much damage they have caused to themselves, and because of them, how much trouble they have caused to other people. So children, this is the second stanza. I suppose you are getting it all. Here, literary device, if we talk about, we would, W and W. So W sound is being repeated. Sudden strangeness, S sound is repeated. His hurt hands, H sound is repeated. So this is alliteration. Definition of alliteration, I have already told. If vowel sound is repeated twice or thrice in consecutive words, they are known as alliteration. चलिए बच्चों, हम थर्ड स्टेंजा की ओर आगे बढ़ रहे हैं. आई होप यू आर ऑल गेटिंग इट. वीडियो पे बने रहिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे पहुंचा सकते हैं. Those who prepare green bars को समझना बहुत जरूरी है. ये डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ द ट्रीज और गैसेस वार विद द एटम, इससे भी रिलेटेड है. तो ध्यान दीजिए. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivor. भाई ऐसे जीत का क्या मतलब है? Victory with no survivor would put on clean clothes and walk about with their brothers, the other people other than you, in a shed, doing nothing. You do nothing. Rather, you should have hands on hands. गले में हाथ डाल के आप उनके साथ घूमिए, बातें कीजिए. The poet becomes heavy and says, I want. In the shed doing nothing, the poet says, what I want should not be confused. हाँ, the poet says, मैं आपसे कह रहा हूं कि चुप रहिए, शांत रहिए, किसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए, युद्ध मत कीजिए, अपने आर्म्स मूव मत कीजिए. इसका मतलब मैं आपको इनएक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं. What I am saying should not be confused with inactivity. Or I am not saying you to become inactive. Life is what it is about. I want no truck with death. I don't want any truck that is full of the dead bodies, the poet says. I don't want any truck that is full of the dead bodies. He urges us to stop the war. आप एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. ये एक्सप्लेनेशन इसलिए एक्सक्लूसिवली आपके लिए तैयार किया गया ताकि आप उसे पढ़ सके मेरे एक्सप्लेनेशन के अलावा. The poet wants us to introspect how we have destroyed our green cover by deforestation. It's a kind of war, and you are harming our green forest. So people must introspect that how they have destroyed our green cover by deforestation, by mining or by fishing, and to realize the aftermath of our action. ये हमने जो किया है उसका प्रतिफल क्या होगा? What will be the result? We must introspect. The poet wants all the people to wear new clothes. Here, new cloth does not mean this t-shirt. New cloth means the new thoughts, the new ideas.
You should have new ideas, new thought in your mind, new wishes in your mind. Here, new cloth means to follow a new approach to realize that mass war and killing is not the solution and will lead to no life on this earth. This we need to introspect. This we need to realize that war will give only death. It will not give life. It will not give peace. The poet wants us to follow the approach of fraternity, brotherhood, and unity. He does not say us to be halt forever, but to stop to introspect our action. ये जो inactivity वाली line है, what I let me read. What I want should not be confused with total inactivity. इसका मतलब क्या है? What poet is saying? What I want should not be confused with total inactivity. Means the poet wants us to follow the approach of fraternity and unity. He does not say at all to take halt. अरे भाई रुक जाओ, कुछ मत करो, फालतू आलसी जैसे बैठे रहो. The poet is not saying that. He does not say us to be at halt forever, but for a moment, till counting 12, stop, think, and act wisely. And introspect, we must introspect our action. बच्चों देखते लिटरेरी डिवाइस क्या यूज है. एलिटरेशन आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है. W and W, ठीक है. और यहाँ क्लीन क्लॉथ, C C एलिटरेशन है. नाउ असोनेंस, अब भी मैंने पहले स्टेंजा पे बताया था. असोनेंस क्या होता है? यूज ऑफ वॉवेल. ओ, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर. देखो इधर ओ ओ ओ ओ ओ ओ. How many times it has been used? Once, twice, thrice, fourth, fifth, and sixth time. This is assonance. याद करो, स्पेलिंग लर्न करो. ASSONANCE, assonance. If vowel, repeat with me. Yes, repeat with me. ASSONANCE, assonance. Am I clear? O, repetition of vowel O and E in a consecutive manner. Repetition is also here. Repetition of the word, use of var. In both the line, var word is used. देखो इधर, यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे ये var यहाँ पे लिखा हुआ है, ये var यहाँ पे लिखा है. The word var and again var is here. So the word var is being repeated. Therefore, it is repetition. एक चीज मैं और बच्चों आपको बताना चाहूंगा. जो रिपीटेशन है, ध्यान से सुनो जो मैं लिख रहा हूं. देखो बोर्ड पे, रिपीटेशन इज ऑफ कोर्स अलिटरेशन ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लिख रहे WAR वार, तो W भी रिपीट है, A भी रिपीट है, R भी रिपीट है. लेटर तो रिपीट हो ही रहा है. तो ऑल रिपीटेशंस आर एलिटरेशन, बट ऑल एलिटरेशन आर नॉट रिपीटेशन. इस बात का विशेष ध्यान रखें. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ और लास्ट स्टेंजा की ओर, सेकंड लास्ट स्टेंजा की ओर. सो फोर्थ स्टेंजा में क्या है देखते हैं. If we were not so single-minded, actually the human being is single-minded. Single-minded means he is a selfish fellow. Yes, single-minded means selfish. About keeping our lives moving, we want that our lives should move ahead. And for once, could perhaps a huge silence might interrupt this sadness. Once, if all the people together will have silence, huge silence is there, definitely this idea is going to be interrupted. Interrupt this sadness of never understanding ourselves. Actually, we have the sadness of not understanding ourselves. Once we understand ourselves, then definitely we are going to understand other people. Ourselves and of threatening ourselves with death. We fear death. Explanation देखते हैं. Now, the poet clarifies to his reader that he does not want to be a passive person, rather he asks us that we should stop to look at our deeds. Deeds means our work, our action. That what we have done to our earth by running after greed and exploiting others.
हमें क्या मिल गया लालच करने से, हमें क्या मिल गया लोगों को बर्बाद करने से, हमें क्या मिल गया. दिस वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट. एंड फर्दर he also wants us to remain in action but to focus on the result, as well as urges them to stop for a while to relish what we have achieved so far. अरे भाई एक मिनट रुको तो सही, सोचो तो सही कि तुम्हें मिला क्या है, क्या हासिल हुआ. After that, he wants us to take some time to look for the damages as well. साथ ही साथ आप ये भी इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपने क्या डैमेज किया है. Some kind of melancholy surrounds us that we forget to see what we have, and in order to extinguish our thirst, अपनी प्यास बुझाने के लिए, we are running and creating problems for humanity all over the earth. एक हम छोटे से अपने स्वार्थ के पीछे हम ह्यूमैनिटी को वी आर पुटिंग इन डेंजर. आप इसको ब्रॉडर सेंस में ले जाइए, ग्लोबल वार्मिंग में. आप इसको ब्रॉडर सेंस में ले जाइए, जो बिल्डर्स हैं जंगल की सफाई कर करके वहां पे बिल्डिंग बड़ी बड़ी तान रहे हैं, फैक्ट्रीज तान रहे हैं. ब्रॉडर सेंस में आप लेके जाएं, इस तरीके से आप सोच सकते हैं. द पोएट अर्जेस अस टू स्टॉप ऑल दिस थिंग्स. आई होप इट इज क्लियर चिल्ड्रन. अलिटरेशन इज देयर एंड देन enjambment, a new one, and for once could perhaps a huge silence of threatening ourselves with death. ये enjambment मैं आपको, आप इसे मार्क करके रख लीजिए, एक सेपरेट क्लास में लेने वाला हूँ फिगर ऑफ स्पीच की, क्योंकि अगर मैं ये अभी एक्सप्लेन करने बैठ गया तो हो सकता है आपका कंसेप्ट आप यहाँ से शिफ्ट होके कहीं और चला जाएगा. अवर पर्पज इज टू गो हेड. मैंने इसलिए बता दिया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इसका यूज हुआ है. The last stanza we are going towards. Pay attention, children. Perhaps the earth can teach us. These are the concluding lines. इसीलिए बहुत ध्यान से देने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे आपको कंक्लूजन मिलेगा. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead. अर्थ हमें ये बता सकता है जब सब कुछ मर गया, सब कुछ खत्म हो गया. When we feel everything is dead and later proves to be alive. गर्मी के दिनों में सारे सीड्स बीज सब सूख जाते हैं, उसके तुरंत बाद बारिश होती है, सब हरा हरा हो जाता है चारों तरफ, फिर से उनमें जीवन आ जाता है, फिर से उनमें हरियाली आ जाती है. लाइकवाइज इट इज अवर लाइफ. देखो इधर, द पोएट वांट्स ऑल ऑफ अस टू अ लेसन फ्रॉम आवर क्रिएशन एज आवर अर्थ अंडरगोज चेंजेस डे बाय डे. इन विंटर चेंजेस टेक प्लेस, सो वी नीड टू टेक अ पॉज एंड रीथिंक, introspect, retrospect, so that everything comes back to life like reincarnation of one soul. Reincarnation, पुनः अवतार हो गया. जब आप ये सोचना चालू कर देंगे तो पुनः अवतार संभव है. And then the poet says, and now I will count up to 12. पहले उसने बोला था पहली लाइन में we will count up to 12, लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. You keep quiet. You keep quiet and you introspect yourself. And now, goodbye. I am going. My work is done. मेरा काम हो गया है. अब मैं जा रहा हूं. अब हम 12 तक नहीं गिनेंगे. तुम 12 तक गिनो. अपना इंट्रोस्पेक्शन करो. The poet tries to convey the purpose of this message and ask them once again to count up to 12 and move to the path of peace and harmony. By giving an example of nature like trees, birds, etc., wants to say that humans should judge upon their action done to our creations. Finally, he ends up saying that now he will count up to 12 so that we all may become quiet and calm. मैं 12 तक गिन रहा हूं, आप शांत रहो, समझो. And after saying this, he says, I will go, because he wants them to be left alone to retrospect. You can retrospect only if you are alone. Therefore, the poet says that he will go now on to it and work in the direction of the peace. So, children, that's all about the poem. And here in the PDF, I have given you the NCERT solution. Questions are given. Question number 1, 2, 3, 4, 5. In the PDF, you will be getting. I will conclude with last 5 lines. That is the conclusion of the poem. आप इस conclusion को यहाँ पे देख सकते हैं.
we have gone through the summary of keeping quiet, where we got the message of introspection and retrospection of ourselves, to wait and watch our action. Basically आप दो वर्ड यूज कर सकते हैं, wait and watch our action before it is too late. एक कहावत भी ना, it is never too late to mend. कभी भी देर नहीं हुई, आप जब संभलना चाहे तब, जब जागो तब सवेरा. आज ही आप अपना रेट्रोस्पेक्शन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए. He further added to watch our action and to stop our activities, so that all shall move towards peace and harmony, and ponder over intellect and be active to endure fraternity and spreading awareness. So that's all, children. I hope you liked this poem, you understood this poem. If at all any queries there, you can write to me, you can mail me, you can WhatsApp me. Keep watching this channel. Thank you. Have a nice day. See you in the next video.